नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी स्थित अयोध्या बाईपास में पोदार इंटरनेशनल स्कूल में एक बार फिर विश्व प्रसिद्ध फ्रीस्टाइल फुटबॉलर जेमिनाइट से विद्यार्थियों को प्रेरणा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिला। विश्व के शीर्ष 10 फ्रीस्टाइल फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल है एवं अनेक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। जेमिनाइट की उपस्थिति से विद्यालय परिसर में उत्साह और ऊर्जा का वातावरण देखने को मिला। वहीं हम आपको बता दें कि जेमिनाइट की भारत में 7वीं यात्रा पर आए हैं। पोदार एजुकेशन नेटवर्क की स्पोर्ट्स एक्सीलेंस पहल के अंतर्गत पोदार इंटरनेशनल स्कूल में भी एक विशेष प्रेरणादायी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस सत्र का उद्देश्य खेल के माध्यम से विद्यार्थियों में सृजनात्मक, एकाग्रता, अनुशासन और दृढ़ता जैसे गुणों का विकास करना था। जेमिनाइट फुटबॉल पर असाधारण नियंत्रण कौशल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ब्रांड के साथ सहयोग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने UEFA यूरो 2020 में आधिकारिक वैश्विक मैस्कॉट के रूप में सहभागिता की है। वहीं 2017 और 2018 में आयोजित UEFA चैंपियनशिप लीग फाइनल में भी विशेष प्रस्तुतियां दी है। Yes, it's very different. I spend a lot of time more south, Mumbai, Bangalore, so it's a bit colder. Feels like the UK up here, which isn't good. But no, it's a good experience to be up here, up north. But I'm sure the kids are going to enjoy it just the same as anywhere else in India. So I'm looking forward to it. सर, आपने फ्री स्टाइल फुटबॉल की शुरुआत की, क्या संघर्ष रहा और कैसा उसका Why did you start only the freestyle? Why did you choose as a career? Yeah, so what was your struggle to reach to that peak? Yeah, so I'm a bit weird. I've never enjoyed normal football. So scoring goals, passing to people, I always found that a bit boring. I always like just having the football and trying to be creative, just showing off basically. So I used to idolize Ronaldinho when I was like 14. I used to try and copy him. So I come home from school, do my homework, and then just practice trying to be Ronaldinho in my garden for about 5 hours a day. And then just love the process of learning tricks, and I loved how difficult freestyle football is. It's like at the start, it's 99.9% failure every day. You're just constantly making mistakes. So I love the challenge with it, and I got pretty good at it quite quickly. Started entering competitions, and then just nearly been doing it 20 years now. So सर, दुनिया के बड़े मंचों पे आपने परफॉर्मेंस दिया है, सबसे यादगार पल कौन सा रहा? What was your most memorable moment on the stage? Yeah, I've got a few. So I came top 10 in the world in 2016. So that's probably like the hardest achievement, most difficult, because you're up against the very best in the world. So that was probably the most difficult achievement. And then I performed on the pitch at the 2017 Champions League final, which is pretty cool, in front of 80,000 people. Performed on the Great Wall of China as well, which is pretty surreal. And I've been to over like 30 different countries, so I've been all over the world. And I think even being in India and being able to inspire, hundreds of thousands of children and students here in India is quite surreal. It's quite I never thought when I started doing keepy uppies in my garden in Ireland that I'll be out inspiring children in India. So this is probably the most surreal sort of thing I've done. सर, भारत देश में युवा फुटबॉल को आप आकर्षित हो रहे हैं, तो सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? What would be your message to maybe the government or to the public or to the people of India for encouraging this kind of career of yours? Yeah, I think they are talking about football, but वो freestyle footballer है, तो game से थोड़ा हटके। आप पोदार इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको भोपाल का अनुभव और उनका बच्चों का अनुभव? वो एक्सप्लोर करना बाकी है, लेकिन overall talk about Podar. What is your experience with Podar children, Podar students? So there are 2 questions. Yeah, one question is like, how did you feel about student of Bhopal, which we have to explore? Yeah, so my message, it's difficult in India because I think that the parents in India are still quite strict and quite academic focused, which is good, but it means that if a child is really, really talented at football, for example, they're probably not going to be professional because their parents
want them to be like a doctor, a lawyer, a teacher, etc., which is good. But I think you need to, if you want to be a world-class athlete, you need to sacrifice things. And I think India sometimes they are afraid to push their children into athletics or sport because it's a risk. But you need to take a risk if you want to get really, if you want to be successful. So I think, yeah, I mean, initiatives like this is good. You know, get athletes into schools to help inspire children. But I think it needs to be the parents as well that need to take a risk with their child. And because if India want to qualify for a World Cup, for example, you know, the children need to be given the opportunity to fully focus on football and get that high level. You can't go to university and play for the national Indian team and qualify for a World Cup. You know, in England, kids at the age of 13 are fully focused on football, just football. And only 0.1% of them will become professional. So you need to take big risks. So I think India, they need to take bigger risks if they want to have the most success in every sport, in my opinion. Yeah. जी, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा. ये फ्री स्टाइल फुटबॉलर है, जो हमारा जो यूजुअल फुटबॉल गेम है उससे थोड़ा अलग होता है. और ये कनाडा से बिलोंग करते हैं. और ये पोदार के सॉरी नॉर्दर्न आइलैंड्स, यस, नॉर्दर्न आइलैंड्स. एंड ये लास्ट 4-5 ईयर्स से पोदार के साथ में जुड़े हुए हैं. और हर जगह मतलब ऑलमोस्ट अभी तक की 75 स्कूलें इन्होंने कवर की है पोदार की. ये 76 स्कूल है पोदार की. तो लॉट ऑफ चिल्ड्रन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम. एंड द ट्रिक्स ही प्लेज, दे आर वंडरफुल. तो हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे स्कूल में आज आए हैं और हमारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके साथ में इंटरैक्ट करने की, उनके स्किल्स देखने की. तो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट. महेंद्र जगदाले, प्रिंसिपल ऑफ द पोदार इंटरनेशनल स्कूल भोपाल.